वेलकम बैक टू कैट स्टेशन। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक पार्ट जो कि आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो एक ये सिंपल सा पार्ट है जिसे हम मॉडल करेंगे सॉलिडवर्क्स 2022 के ऊपर। तो टाइम आया कि अगर आ जाएँ स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। सबसे पहले न्यू पार्ट पे जा रहा हूँ जब तक हमारा नया पार्ट ओपन हो रहा है। अगर आपने अब तक वीडियो को स्टार्ट कर दिया देखना और न्यू है चैनल के ऊपर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल जो हम चेंज करते हैं मिलीमीटर्स पे हम आ गए और आज स्केच करने जा रहे हैं फ्रंट प्लेन के ऊपर। सबसे पहले मैं एक सर्कल सेंटर से बनाता हूं और इसका डायमेंशन यहाँ पे स्केच में आपको नज़र आ जाएगा। ये डायमेंशन है 100 mm इसका डाया है। सो ये हमारे पास 100 mm डायमीटर और इसे एक्सट्रूड करने जा रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ 130 mm, बट इट विल बी मिड प्लेन एंड ओके। उसके बाद अगेन आ जाएं फ्रंट प्लेन के ऊपर और स्केच और हेक्सागोन, एक हेक्सागोन बनाया मैंने। और आ जाए उसके बाद नेक्स्ट है हेक्सागोन। द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स आर 80 mm, so smart dimension from here to here this is 80 mm diameter, not the diameter, 80 mm distance features and the total length is 200 mm. so हम जा रहे हैं इसे एक्सट्रूड करने 200 mm एंड ओके। उसके बाद हमें करना है अगेन आ जाएं फ्रंट प्लेन स्केच। एक सर्कल बनाया मैंने और ये सर्कल है हमारे पास 60 mm डायमीटर, यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है इजली स्केच पे। तो ये हमारे पास 60 mm डाया and it's going to be extrude cut but through all both and okay। ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है रेडी। अब हमें करना है टॉप प्लेन, बट टॉप प्लेन यहाँ पे आ जाए तो सेंटर से टोटल हाइट हमारे पास 75 mm, ये डायमेंशन हमारा हेल्प करेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया टॉप प्लेन और आज रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन। सेम आपको भी यहाँ पे 75 mm पुट करना है एंड इसे कर दे ओके। स्केच सबसे पहले सर्कल और एक सर्कल मैंने बनाया जिसका डायमेंशन है यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ये टोटल है 80 एंड 60, 80 mm डाया। outer dia is 80 mm and features extrude boss space। we are going to first downward and now you can find the up to next and okay। now once that you can hide this plane and simply sketch on that plane circle। ये सर्कल है हमारा 60 mm dia and features extrude not extrude boss space। we have to extrude cut and how much we have to cut, this height is 15 mm, so we are going to cut it up to blind and only 15 mm and okay। now next is at that plane again hexagon and this time this hexagon is, let me show you here, this is 45 mm gap between these two opposite sides। so this time from here to here is 45 mm and now control 7 for isometric view। now let me show you, we are going to extrude cut and we want to cut it we want to pass the hole here। so we have two options, we can simply increase this, you can see now it shows ये टोटल कट कर रहा है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपके पास मैनुअल ऑप्शन है। वन मोर ऑप्शन that I like is you can simply up to next, it will cut the whole surface that's come till the center of the circle and okay। now it's done, control 7, the last but not the least, we are going to chamfer and chamfer we are going to use this edge chamfer, vertex chamfer, and I'm selecting one of the chamfer edge. The dimensions I've put is 15 mm here, 5 mm in the second
and 15 mm here. उसके बाद शैम्फर हमें करना है एक करके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं और ये वाला इंटर, अगेन शैम्फर, this one and enter, again chamfer. We have to do it 6 times, by the way. This one and enter, again chamfer, the third type and enter, and this is the last chamfer, the last edge and enter. Now next is we want to mirror these chamfers on the right hand side, so I'm going to use this mirror. Faces to mirror, I go for the front plane, and features to mirror, I want this chamfer 1, chamfer 2, 3, 4, 5 and 6. Right? You can see यहाँ पे आपको सारे chamfers नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसे करता हूँ ओके, तो एज और फ्लिट chamfer does not exist। तो इस एरर को आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाए ऑप्शंस, अगर ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है तो ऑप्शंस के ड्रॉप डाउन पे जाएं और इसे सिलेक्ट कर लें ज्योमेट्री पैटर्न, मैं इसे कर दूँ ओके। नाउ अब आप देख सकते हैं आपका जो मिरर था वो कंप्लीट हो चुका है और यहीं पे आपका स्केच हो चुका है कंप्लीट। मैं इसका जा रहा हूँ अपीयरेंस और मेटल, and in the metal I'm going for the galvanized and shiny galvanized, and this is looking good. So this is how simple we can make this shape using the SolidWorks. उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल कैड स्टेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी आसानी हो सके। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का इख्तिताम। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे।